Good morning. Morning, ma'am. How's it going? Just general discussion is going on, man. So, has the uh, internet ban moved in Rajasthan now? No, no, now is okay, man. Now is working now, but some strictness is going on. Okay, okay, But not that's good. everything is going good. Actually, in near to Ajmer, na Ajmer, Muslim community is too high over there. Always make the video of against of Nupur Sharma and then post the video. तो काफी सारे वो चलते रहते हैं controversies going. Mm, right. Okay. Okay. So let's read something. Aryan, you want to begin? So Yes. I've noticed one thing whenever you guys ask someone to continue, it should be like, do you want to start reading? Continue is जब हम कुछ मतलब जब कुछ ऑलरेडी चल रहा हो और उसको हम जारी रख रहे हैं तो ऐसा तो जो सही तरीका होता है that is like Aryan, do you want to start reading? Yes. Arya? Yes. Listen. Reading? Uh, mm, I can't. Mm, Hello. Everything okay, Aryan? Yes, but I can't see. Oh, okay. I started. Lesson. Manufacturers and dealers are promoting leasing more than even before, and it's working today. About 30% of the people who drive new cars are leasing instead of buying. That uh, that's a jump from 2.5%, a little more than a decade ago. Before deciding whether to buy or lease a new car, the Minnesota Attorney General's office urges Minnesota consumer to review the following information about leasing. Leasing is basically long-term car rental. It usually lasts 2 to 4 years. You agree to pay a leasing company a fixed amount each month to drive the car which the leasing company owns. You also pay for insurance and routine. You would for a car. You would for a car you buy has with the car you own.
If you damage a leased vehicle, you and your insurance must cover repairs. It's oh, yes. It's important to note that unlike buying a car, leasing may mean that you will always have monthly payments. When you buy a car, the car loan is typically paid off long before the car is worn out. Warmer. In contrast, leasing usually means endless payments. Although you may be able to buy the car at the end of the lease, most people who lease turn in the car and end of term and lease another. So the payment continue in the long run. Leasing may be more costly than buying, depositing the lower monthly payments. There are several reasons why leasing is popular. With the prices of car climbing, it has been harder and harder to afford monthly payment that will pay off a car in 3 years or lease. Plus, with new cars average about $20,000. Loans are being stretched over 4 to 6 years. By the time you truly own a car, it may not be worth a whole lot in the marketplace. You are going and allow you to drive a car without making payments. Leasing a car, uh, leasing is also popular with people who do not like driving older vehicles. They can also drive a new car, needing relatively little maintenance and fewer repairs than most older cars. If you lease a new car over a couple of years, you can always drive a fairly new car. You will never escape monthly payments, but the payment will be lower than they would be if you were buying a new car every 2 years. This is leasing means attraction. There is no 3 day cooling off period when you lease, just as there isn't when you buy a car. Carefully consider what you are signing when you sign a lease before you are promising to make lease payments for the full term of full term of The lead. lease. Good. Very good, Aryan. ओके, लीज का मतलब पता है किसी को? मैम पे करना मैम, नो लीज मतलब हायर करना किसी चीज को मैम, मंथली करके, जैसे लीज पे रेंट लेते हैं ना। तो लीज लीज। क्या होती है? लीज कॉन्ट्रैक्ट होता है जब यस यस। जब हम यहाँ पे जैसे यूएस में जब हम घर रेंट पे लेते हैं तो हमें लीज साइन करनी होती है 1 साल की। तो वो लीज में क्या होता है कि उसमें कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस होती हैं कि ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, और 12 महीने की लीज है। तो कोई भी बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसको लीज कहते हैं। एस्केप, मैम भाग जाना भागना। रिपेयर्स, मैम ठीक करना एंडलेस मतलब जो खत्म कभी ना हो खत्म ना कभी। होना वॉर्न आउट मतलब मैम वार्निंग देना नहीं।
Worn out. जब कोई चीज घिस जाती है तब बोलते हैं worn out। जैसे जब हम कोई चीज बहुत टाइम के लिए यूज करते हैं तो वो चीज घिस जाती है। तो इसमें यहाँ पे क्या कह रहे हैं ये लोग, when you buy a car, the car loan is typically paid off long before the car is worn out। मतलब जब हम कोई भी कार लोन पे खरीदते हैं तो जो लोन का पैसा है वो काफी पहले पूरा पे ऑफ हो जाता है, जिससे पहले कि कार जो है वो बिगड़ना स्टार्ट हो जाए, घिसना स्टार्ट हो जाए। रूटीन। दैनिक। मैम जो अपना दे- हर दिन जो जो करते वही। रूटीन जब हम एक या डे टू डे लाइफ। हाँ, जो हमारा डेली का पूरा वो होता है कि हम किसके बाद क्या कर रहे हैं उसको हमारा रूटीन। शेड्यूल जो होता है ना। दिनचर्या बोलते हैं मैम, दिनचर्या। 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 हाँ। मैं मैं यहाँ पे यूएस में अकेले रहती हूँ, तो फिर और जो मेरी पूरी टीम है जिनके साथ मैं काम करती हूँ सारे अमेरिकन हैं। तो मैं सिर्फ हिंदी में अपने घर पे बात करती हूँ, और बाकी अगर मेरे आसपास वाले लोग हैं तो उनसे भी इंग्लिश में ही बात करती हूँ। तो बहुत बार ऐसा होता है मैं घर पे बात करती हूँ और मैं हिंदी के वर्ड्स भूल जाती हूँ। जैसे भी मैं आज सुबह मम्मी को वो बोलना चाहती थी, अब मैं फिर से भूल गई। गुआवा को क्या बोलते हैं हिंदी में? अमरूद। अमरूद। हाँ अमरूद। तो तो मेरे साथ ये इतना ज्यादा होता है क्योंकि कोई होता नहीं होता। अब लाइक इस कॉल में एटलीस्ट मैं भी, मेरी भी थोड़ी वो प्रैक्टिस हो जाती है दोनों इंग्लिश और हिंदी की, सो इट्स अ गुड थिंग। अच्छा, कंज्यूमर्स। मैम उपभोक्ता। हाँ, उपभोक्ता। कंज्यूमर मीन्स उपभोक्ता। हाँ, करेक्ट। हाँ, कस्टमर, करेक्ट करेक्ट। प्रमोटिंग। मैम प्रमोट करना किसी। राइट, ठीक है। रिव्यू। मैम देखना। देखना, दोबारा से एक बार हाँ, किसी किसी चीज चीज को को। दोबारा से उसको करना। हाँ, देखना। ठीक है। ओके। रिव्यू माने देखना, रिव्यू मतलब अगेन देखना। हम्म ओके, अब मैं दूसरा शेयर करती हूँ। किसी के पास और कोई स्पेसिफिक वो है कि क्या रीड करना है कुछ, वरना मैं अपने हिसाब से शेयर करती हूँ। मैम जो प्रीवियसली स्टीफन हॉकिंग्स वाला था ना, वो एक बार थोड़ा सा फिर से करा देते मैम। उसमें काफी सारे वर्ड्स थे जो लिख नहीं पाया। अच्छा, व्हाट इज दैट? बट राइट, मैम, आई कैन स्टार्ट सेंडिंग लेट्स एक ये काम कर देते हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दो एंड बट उसमें कोई चैटिंग नहीं, सिर्फ और सिर्फ नए वर्ड्स डालते रहते हैं और मैं उसमें कंटेंट शेयर कर देती हूँ। मैम बट ये ना, ये जो आप पैरा देते हो ना, अगर ये हमें मिल जाए तो इसके जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं इसको हम लोग खुद से प्रिपेयर कर लिया करेंगे, तो हमारा वोकैब स्ट्रांग हो जाएगा। है ना, मैं हाँ, ये थोड़ा सा मैं चाह रही थी। हाँ, तो आई थिंक ये हम्म हाँ, ओके, ओके, okay, done. So I will keep sharing whatever. So there are like I have some documents that I can start sharing. तो फिर जो भी whatever we will read, so like every day everybody can then just practice it from that. यस मैम, डेफिनेटली। Okay, fine. Okay, so I'll share my number with you, Pankaj, and then you can create a WhatsApp group and yeah. Okay. I am not able to find the Stephen Hawking, but I'll find it for before the next class.
Okay, so okay, I have a small paragraph, and Divya, please start reading it because it's a very simple one and a small one. So, 1 second. It's about a spider. This is how a spider looks, and start reading from most spiders. Most re- Spiders. spider live on on land, but this spider difficult it speed. Most of in its time underwater. How does it Breathe. breathe the uh, it ये क्या लिखा हुआ है? It breathes by making By making a tent, tent full of air air, of air um, slow bubbles, bubbles underwater. First, he depends me spins, a word in the zipper of shape, a zip of a well bell, then in the, then it sits fixes, uh, it of it who rounds under the water nest in swims, swings up to the top of the water and traps, trap of five tiny bubble, tiny bubbles of the with its its hairy back legs, hairy back legs it ये क्या लिखा dragons drags brings the bubble to its world it does this is many times, it any time until its home is full of air air then it sits now and snug, sung in it world of the fruits on trying fish, tiny tiny fish and other water animals. The passage is about a uh, spider. spider that ओके ओके, दिव्या एक बार मैं पढ़ूंगी, छोटा सा पैसेज है, आप मेरे प्रोनाउंसिएशंस को सुनो एक बार कि मैं कैसे पढ़ रही हूँ, ठीक है? okay Most spiders live on land, but this spider is different. It spends most of its time underwater. How does it breathe? It breathes by making a tent full of air bubbles underwater. First, it spins a web in the shape of a bell, then, it fixes it to plants under the water. Next, it swims up to the top of the water and traps a tiny bubble of air with its hairy back legs. It drags the bubble to its web. It does this many times until its home is full of air. Then it sits nice and snug in its web and feeds on tiny fish and other water animals. ठीक है?
तो तुमने अच्छी कोशिश की, बस ऐसे ही छोटा-छोटा प्रैक्टिस करते रहो एंड एक बात ध्यान रखो जब फुल स्टॉप होता है, तो हम ना 2 सेकंड बस ऐसे 1-2 माइनर ब्रेक लेते हैं। एक अगर फुल स्टॉप होता है तो 2 तक का काउंट करो, अगर कॉमा होता है तो 1 का, क्योंकि जो पूरे पैराग्राफ्स होते हैं ना, हर एक का एक एक फ्लो होता है, एक एक एक्सप्रेशन होता है। तो जब भी रीड करो, स्लो रीड करो और जहाँ-जहाँ कॉमा है, जैसे मोस्ट स्पाइडर्स लिव ऑन लैंड 1 बट दिस स्पाइडर इज़ डिफरेंट 1, 2 इट स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स टाइम। तो मतलब जैसे फुल स्टॉप है तो मैंने 1, 2 दिमाग में सोचा, बोलना नहीं है। तो ऐसे करके प्रैक्टिस करते रहो और फिर कल एक और पैसेज पढ़ते हैं। ओके बट मैम। ऐसे ही प्रैक्टिस करो। थैंक यू मैम। ओके, तो नेक्स्ट करुणा आप जाओगे? ओके मैम। ओके, ये इंटरेस्टिंग सा मैसेज लग रहा है। हाउ हवाई वाज क्रिएटेड। हवाई अगर सुना है तो हवाई इज अ प्लेस, नेम ऑफ प्लेस। हाँ, यूएस में है। इट्स हवाई पूरा, द्वीप कहते हैं मैम उसको, आइलैंड टाइप का कहते हैं ना। हाँ, पूरा आइलैंड है यस हवाई। मैम। और बहुत सुंदर जगह है। मैं अभी तक गई नहीं हूँ, बट जैसे उस हवाई के अंदर काफी सारे अलग-अलग आइलैंड्स आते हैं, माउई और कुछ-कुछ और बहुत सारे हैं, ओआहू। तो अच्छा ओके, लेट्स रीड दिस। मैम, ये कहाँ से स्टार्ट है? Moy sat on the beach. अच्छा। Moise sat on the beach looking out to sea. He was waiting for his brothers to return from fishing. He had wanted to go fishing with them, but they said, "Why should you take you? We do all the work paring and you pull in all the fish." Mavi had to admit this was true. He was just a little lazy. To pass the time, Mavi fascinated a fish hook from bone. He was a good carver, and soon it was ready for use. He held it up in the sunlight to admire it, and as he did so, he prayed to the god to give its special powers. At last, Mavi's brother returned. "How many fish did you catch?" Mavi asked. "None," they answered. There were no fish in the sea. There was nothing to catch but squid. "You should have taken me," Mavi told them. "How do you think you can catch fish that even are not there?" his brother asked crossly. "Take her tomorrow and I will show you," said Mavi with a mischievous. Mischievous grin. अच्छा, पूरा इधर लिखा है मैम, एक्चुअली ना इधर लिखा अच्छा, mischievous grain. The next day, the brother took Mavi's fishing with them. It was not because they believed he would catch any fish, quite the opposite. They wanted to teach him a lesson for boosting. When they were far out to sea, the brothers began to fish, but Mavis lay back in the ca- can- canoe, enjoying the sun. "Why are not you fishing?" the brother asked Mavi. "You said you could catch some fish, so why don't you start?" We are not far enough out," replied Mavi. "Paddle some more." The brothers paddled further out to sea, but Mavi told them to go. still. मैम, क्लियर हो जाए। Go Come, still. Go still और फिर well known. हाँ, Oh wait, I think बस यहीं तक है. My told them to go still. go still, हाँ। Okay, ठीक है. Um, okay, तो इसके words देख लेते हैं.
admire मतलब एडमायर मतलब प्रशंसा करना मैम। हाँ करेक्ट। बोस्टिंग का मैम मतलब पता है किसी को? जी। बोस्टिंग, वो झूठ बोलने वाला इंसान होता है। बोस्ट बोस्ट वो होता है कि जो अपने बारे में बढ़ा चढ़ा कर बताए, फेंकना। हाँ, एग्जैजरेट मैनर में। एग्जैजरेट, बोस्टिंग, एग्जैजरेटिंग, ये ये एक वर्ड था कनू। कनू का मतलब पता है? CANOE। मैम वेयर इज द वर्ड? इसमें मैं हाईलाइट नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं क्यों। ओके मैम, कोई बात नहीं, देखते हैं। सेकंड लास्ट पैराग्राफ में है, ओके। एक्चुअली थर्ड थर्ड लास्ट पैरा में, लास्ट line पे, when they were far out to the sea the brothers began to fish but Maui lay back in the canoe enjoying the sun. Why aren't you fishing? The brothers asked Maui. ये दिख रहा है? फनी नहीं। नहीं हो नहीं, सकते? मैम वैसे भी कन्नू, मीनिंग नहीं पता है इसका। अच्छा कनू। कन्नू मीन्स मैम फनी टाइप, फनी वे, यू हैव नहीं एंजॉय इन नहीं नहीं फनी वे। नहीं, कनू मैं दिखाती हूँ एक्चुअली, ये अच्छा वर्ड है। एक सेकंड। कनू मैंने मैंने भी यहाँ आकर के ही सीखा है कि कनू क्या होती है, बट एक तरह की बोट होती है। एक ओके। सेकंड। ये ये होती है कनू। तो छोटी राफ्ट टाइप होती है। हाँ एक सेकंड। उप्स। हाँ मतलब ये जो इस शेप की होती है ना, ये हम्म। इस टाइप की छोटी सी बोट जैसे, तो इसमें हम्म। इसमें कनू में बैठ करके हम लोग कायाकिंग करते हैं। ओके। हम्म। तो एक सेकंड। ओके। नेक्स्ट पैसेज। ओके, who's going next? इंटरेस्टिंग है ये, इसमें बहुत सारे वर्ड्स भी हैं, काफी सारे वर्ड्स हैं। दिव्या आपको फर्स्ट पैरा पढ़ना है, अबाउट द पैसेज, रीजन फॉर रीडिंग, अगर मन है तो, वरना और किसको पढ़ना है? मैम खुशी। खुशी गो, हाँ खुशी गो फॉर इट, मैंने देखा ही नहीं आप कॉल पे हो। एक सेकंड। हाँ, यहाँ से पढ़ो। The first woman to sail the Atlantic alone. Atlantic alone. About the passage, you have probably heard about Amelia Earhart, the first woman to fly solo over the Atlantic. But have you heard of the first woman to sail it alone? Heading for the United States, and Davison set out from the native England in 1952. This selection describes part of her historic voyage. Reason for reading. Before you begin reading, try to imagine the kind of problems this woman faced and how she might have dealt with them. Then compare your ideas with the facts presented in the passage.
Read the passage. She opened a Christmas package given her by a friend before she sailed. The greeting cards and small gifts not only failed to cheer her, but also made her feel more lonely. The boat was making only a half a knot, so she ran the engine for a while and this improved her spirits. She decided to run it a little every day while the calm lasted. It keep it kept the engine from corroding and the sound was good for her morale. She was discovering what a good many other long distance sailors had learned. The single handers main enemies are lack of confidence, discouragement, and loneliness. The, the next day she got the wind. She had asked for too much of it. A squall struck before daylight, healing Felicity and dangerously, and Davy Swan dropped her way on deck and struggled to reach the mainsail. The wind was from the west dead ahead. Little progress was made during this difficult day of squalls. Finally, she gave up trying to sell and consoled herself by reading poetry in the cabin. In the afternoon, the wind blew briefly out of the east, and a few miles were made toward the goal. The rain squalls and the spray had soaked everything in the cabin. By this time, we had run out of the places to store, and there was no way to dry them. More calms inter- interposed with squalls. Fuel for the engine was almost gone, and she knew she would not be able to run it a little every day as she had hoped. She passed her time reading and inventing memory game, games. By January 8th, struggling in this Way to gain. way, way to gain a few miles every day, he calculated that she was only about 700 miles from Barbados, the nearest of the West Indies. The twin staysail, staysails were working again now, and she was creeping along on her course. But the fatigue was beginning to tell. She suspected she was suffering from vitamin deficiency, although she had faithfully taken her vitamin tablets, and her mental depression was as so much concern to her as her physical health. Although she has she had originally planned to sail a little farther to Antigua, she decided to head for Barbados, the nearest West Indies i- island. Sailing through squalls that required her to reef and change sail constantly, usually in the middle of the night. She fought on to the northwest. She passed the 60-day mark, the maximum time he had calculated for the voyage. Now she must ration both food and water rigidly to make Felicity and settle better. He tried trimming heavy ropes astern, but in the challengeable squall, the ropes got tangled up, and she had to pull them into the cockpit and untangle them. This exhausted her even more, and her eyes were getting so swollen that seeing was difficult. Finally, on January 18, weak and dissipated,
She made out a faint shape on the horizon, the mountains outlines of Barbados, as she came up on the island, hungry for the sight of houses and green grass. Night fell, and she was forced to stand offshore until morning. वेरी गुड, एक्सेलेंट। सबसे पहला वर्ड जो है आइलैंड होता है, जो नीचे से थर्ड लाइन है, एज शी Okay, केम अप ऑन द आइलैंड, okay. दिख रहा है? Yes, तुम लोगों को मेरा कर्सर दिखता है जब मैं पॉइंट करती हूँ कि नहीं? यस मैम, बट इस बार जो आपने पैराग्राफ मैम दिया है ये थोड़ा सा मतलब क्लियरली नहीं है हाँ, प्रीवियस इसमें वाला वर्ड से। बहुत सारे हैं। थोड़ा सा मैंने डिफिकल्ट वाला ले लिया था क्योंकि इसमें वर्ड्स बहुत सारे हैं। तो ये बट अब हम मतलब रीडिंग में भी मतलब क्लियरिटी नहीं आ रहा। हाँ, तो अब हम इसके वर्ड्स देखते हैं क्या-क्या हैं और इसका मतलब भी समझने की कोशिश करते हैं। तो बात कर रहे हैं कि she opened a Christmas package given to her by her friends before she sailed. The greeting cards and small gifts not only failed to cheer her but also made her feel more lonely. Lonely का मतलब? अकेला। lonely मतलब अकेला. हम्म, एकांत। हाँ। The boat was making only a half a knot, so she ran the engine for a while, and this improved her spirits. Improved का मतलब? इम्प्रूव मतलब अच्छा करना. हाँ, अच्छा करना। सुधारना, किसी चीज को सुधारना। तो अभी तक इन लोगों ने क्या कहा है कि उसको एक क्रिसमस का पैकेज मिला था जो उसके फ्रेंड्स ने उसको दिया था, जिससे पहले कि वो नाव सेल्ड सेल्ड का मतलब पता है? सेल्ड मतलब होता है कि सेल कर सेल करना किसी भी चीज. सेल नहीं नहीं नहीं। डे. सेल होता है कि जब पानी में हम लोग जहाज होता है या Okay, ऐसे. फिर जहाज में जब बैठते हैं, लाइक वाटर बोट्स या क्रूज में सेल करते हैं। समझ आ गया? हाँ मैम, एक सेल बोट भी होती है, सेल बोट हाँ, जैसे आपने आपने बताया था। हाँ, राइट राइट। कायाकिंग तो करने वाला वैसे सेल बोट होती है जिसमें वो पाल लगी होती है, पाल। हाँ, तो वो ये तो कपड़े का होता है। राइट, तो ये किसी की स्टोरी है जो कि नाव चलाने के लिए जा रही है और उससे पहले उसको किसी ने गिफ्ट दिया है और बोल रहे हैं कि जो उसको गिफ्ट्स और ग्रीटिंग कार्ड सब कुछ मिला था, वो उसको उससे वो खुश नहीं हुई थी, बट वो और ज्यादा अकेला फील करने लगी थी। सो इट्स नॉट ओनली फेल्ड टू चीयर हर अप, मतलब इट फेल्ड टू चीयर अप, मतलब इट फेल्ड कि वो खुश हो जाए और उसको और ज्यादा लोनली कर दिया। फिर वो एक सर्टेन स्पीड पे चल रही थी, लेकिन फिर उसने एक और उसने इंजन चलाया जिससे कि उसको और अच्छा लगने लगा, उसकी स्पिरिट्स मतलब उसकी अंदर से आत्मा अच्छा फील करने लगी। She decided to run it a little every day when the calm lasted. Okay, calm मतलब जब शांत, शांत समुद्र होना। होता है शांत होता है। तो it kept the engine form from corroding. Corroding का मतलब जंग लग जाना। तो कह रहे हैं कि पानी में कोई चीज खड़ी रहती है, अगर वो चलती नहीं है तो उस पे जंग लग जाती है। तो ये एक वर्ड है करोडिंग। करोडिंग मतलब जंग लगना। तो ताकि जंग ना लगे वो क्या करती थी, वो थोड़े थोड़े टाइम चलाती रहती थी उसको जब शांत होता था ओशन। एंड द साउंड वाज गुड फॉर हर मोराल। उसको जो आवाज लगती थी उसके मोराल का मतलब पता है किसी को? नैतिक। हाँ. नहीं. मॉरल किसी का वैल्यूज से अगर जुड़ा हुआ मॉरल। मनोबल किसी का मनोबल अगर डाउन हो गया है तो उसको हाँ, सेल्फ एस्टीम, करेक्ट। तो मोराल मतलब अपने उसके सेल्फ एस्टीम, उसका अंदर से जो वो फील कर रही है उसके लिए। हौसला बढ़ाना उसका. हाँ, करेक्ट, हौसला बढ़ाना, ये सही वर्ड है। तो जो भी लिख रहा है वो लिख लो। मोराल मतलब हौसला बढ़ाना, सेल्फ कॉन्फिडेंस। He was discovering what a good many other long distance sailors had learned. The single handers main enemies are a lack of confidence, discouragement and loneliness. Enemies का मतलब? शत्रु। दुश्मन. दुश्मन, राइट। शत्रु कुछ भी कहो। डिस्करेजमेंट? किसी डिस्करेज को. जैसे इनकरेज होता है ना, इसका अपोजिट है हाँ, डिस्करेज करना। हाँ, इनकरेज मतलब किसी को बढ़ावा देना, हाँ, किसी बढ़ावा को। देना, साहस और देना। ये और हाँ, और ये है डिस्करेज का कि अपोजिट हो जाएगा उसका। हाँ, किसी को नीचा दिखाना। नीचा डिस्करेज दिखाना। कभी भी नहीं दिखा करना चाहिए किसी को। तो एनकरेज, डिस्करेज। The next day she got the wind
she had asked for too much of it. A squall. Squall का मतलब पता है किसी को? A squall stuck. वो जो हवा एयर, का बहुत हवा। प्रेशर होता है ना। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। जो बहुत तेज से हवा का एकदम से वो आया, struck before daylight, healing Felicity and dangerously. तो यहाँ पे Felicity and नाम है। Felicity का मतलब भी होता है, किसी को पता है क्या होता है Felicity का मतलब? बहुत अच्छा, यहाँ पे लोगों के कितने सारे नाम होते हैं और बहुत सुंदर वर्ड है Felicity। Nobody? Felicity होता है जब हम फेलिसिटी मैम, फेलिसिटी मतलब बहुत अच्छा, आनंद, फेलिसिटी। हाँ, बहुत खुश होना, एक्सट्रीम यस, हैप्पीनेस। एक्सट्रीम हैप्पी, राइट राइट। हम्म। आशीर्वाद जैसे ब्लेसिंग टाइप होता है ना, कि फेलिसिटी, हाँ दिस टाइप of आशीर्वाद देना। हाँ, मतलब बहुत आशीर्वाद थोड़ा सा अलग हो जाता है। इस फेलिसिटी मतलब हैप्पीनेस, एक्सट्रीम हैप्पीनेस होता है। तो स्टक बिफोर हीलिंग। हील का मतलब पता है? हीलिंग यस मैम, अंदर से अच्छा करना, हील करना। नहीं, वो HEALING होता है। ये इसलिए मैंने बोला है। तो दो वर्ड्स होते हैं, एक ये ही HEELING होता है और एक HEALING होता है। तो जो आप बता रहे हो हील करना, जब हम किसी को जैसे वो हाँ, अंदर से हीलिंग करते हैं, हील किया। मेडिकल में यूज करते हैं ये हील करना। हाँ, झुकाव होना होता है मैम इसका, हीलिंग, HEELING। क्या मतलब होता है? झुकाव, झुकाव किसी के प्रति झुकाव, माने रिस्पेक्ट करना है, हीलिंग। और वो सोचो। मतलब एक मैम हीलिंग का तो नहीं पता। हील मतलब तो होता है ये पैर का जो नीचे वाला पैर का पार्ट होता है। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। तो हीलिंग वही, जब अपने टोस पे ऐसे खड़े होके हील करते हैं ना, फॉरवर्ड, वो चीज बोल रहे हैं। बट HEEL बस हील से ही रिलेटेड होता है, कुछ अलग नहीं है। The wind was from the west, dead ahead. Little progress was made during this difficult day of squalls. Finally, she gave up trying to sail and consoled herself by reading poetry in the cabin. Consoled matlab? किसी को वो बोलते हैं ना। आश्वासन। हाँ। क्या हाँ, बोलते हैं? आश्वासन। आश्वासन। हाँ, हाँ, वो होता है सांत्वना है जो। सांत्वना कंसोलेशन, दे। हाँ हाँ, तो कह रहे हैं कि जो विंड थी वेस्ट से, वो मतलब वो बहुत स्ट्रगल कर रही थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा तेज थी। जो स्क्वॉल था वही एकदम से प्रेशर बना। तो उसने क्या किया कि उसने गिव अप कर दिया कि करना ही नहीं है, और अपने आप को आश्वासन दिया कि इट्स ओके, अब मैं इट्स ओके, आज सेल नहीं करूंगी मैं। तो फिर वो अपने केबिन में जाके और बुक पोइट्री पढ़ने लगी। In the afternoon, the wind blew briefly out of the east, and a few miles were made toward the goal. The rain squalls and the spray had soaked everything in the cabin by this time. She had run out of places to store wet clothes, and there was no way to dry them. ये समझ आया सबको? कह रहे कि बारिश भी हो रही थी उस टाइम पे, और उस बारिश में से क्या हुआ कि पूरे केबिन में जितना सामान था सब सोक हो गया। सोक्ड का मतलब अब्सॉर्ब, सोक्ड। जब हम एब्जॉर्ब हो बारिश, गई। हाँ, ड्राउन नहीं 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 नहीं, ड्राउन अलग वर्ड होता है। वॉशिंग मशीन के अंदर सोप का ऑप्शन होता है कपड़े भिगाने के लिए। हाँ, भीगना। सोक मतलब जब हम बारिश में बिना छाता लेके जाते हैं तो वी गेट सोक्ड इन रेन। अयो। बोलते हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा बोलते हैं, आई एम गोइंग टू सोक सनलाइट, मतलब हम धूप सेकने जा रहे हैं। तो सोक। मैम, हम लोग बोलते हैं कि मैं चने सोक कर दूं, रात में भिगा दूं ताकि छोले बना सकूं सुबह। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ये भी होता है ना, तो सनबाथ भी तो होता है ना, सनबाथ। हाँ, सन बेदिंग करते हैं यहाँ पे। मेरा हाँ घर जो यहाँ पे है वो एकदम पार्क के पास में है। तो तो मेरे को भी इतना अजीब लगा। मैं कभी कभी वॉक करके जाती थी और मैं देखती थी कि लोग एकदम मतलब बीच के कपड़े पहन के और पार्क में लेटे हैं चादर बिछा के। तो वो धूप में बस टैनिंग करते हैं अपने आप की, सोक करते हैं मैम, अपना। मॉर्निंग की धूप बहुत अच्छी होती है, उसको लेना भी चाहिए। हाँ, मैं भी बहुत ज्यादा पार्क जाती हूँ। मेरे घर, हाँ।
मेरा घर मतलब ऐसे घर से बिल्कुल निकलते ही सामने बहुत बड़ा सा पार्क है, तो और मेरे पास डॉग है, तो फिर मेरे को जाना ही पड़ता है मैम रोज। वहाँ का वेदर कैसा रहता है इस टाइम पे? एक्चुअली मैं कैलिफोर्निया में रहती हूँ, तो कैलिफोर्निया का जो वेदर है वो बेस्ट वेदर है, तो बैंगलोर जैसा वेदर है। जैसे बैंगलोर में कभी हाँ हाँ हाँ, एक्सट्रीम गर्मी नहीं होती माइल्ड है, टेम्परेचर होता है वाइट, एकदम अच्छा। हाँ। तो यहाँ पे अगर गर्म होता है तो बिल्कुल हल्का गर्म होता है, और लाइक एक महीने के लिए होता है। तो यहाँ घरों में एसी भी नहीं है, मतलब मेरे घर पे एसी नहीं है, और ज्यादातर घरों में एसी होता ही नहीं है। और ठंड भी हल्की सी होती है, एक जैकेट वाली। तो मैं यहाँ यूएस मूव करने से पहले मैं बैंगलोर में थी 4 साल। तो मुझे बिल्कुल वैसा ही फील होता है, यहाँ पे मौसम अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। मैम सच कहूँ तो मतलब आपका लक अच्छा है जो आप बैंगलोर में रहे फिर कैलिफोर्निया पहुंच गए, अदरवाइज हम लोगों को इंडिया में मतलब जैसलमेर जगह जैसे जगहों पे भी रहना पड़ रहा है। हाँ, ये तो है। मैं एक्चुअली राजस्थान वैसे में क्या टेम्परेचर है? गर्मी तो मैंने भी देखी है, स्पेशली लू जो होती है। मैं लखनऊ की हूँ ओरिजिनली, तो मैंने गर्मी तो देखी है बहुत ज्यादा। अच्छा, एनीवेज वापस जाते हैं। अच्छा, मोर काम्स इंटरस्पर्स्ड विद स्क्वॉल्स। इस लाइन मोर काम्स इंटरस्पर्स्ड विद स्क्वॉल्स, इसका मतलब इंटरस्पर्स्ड का मतलब डिस्ट्रीब्यूट मैम होता है। mm, डिस्ट्रीब्यूट, इंटरस्पर्स, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब पता है? हम बांटना, बटा हुआ। तो डिस्ट्रीब्यूट कह कर। रहे हैं कि मोर काम्स मतलब ज्यादा शांति, और मतलब दो शांति और जो एयर का एकदम से वो था, वो दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड थे। थोड़ी देर काम्स आ रहे थे, थोड़ी देर स्क्वॉल्स आ रहे थे। Fuel for the engine was almost gone, and she knew she would not be able to run it a little every day as she had hoped. She passed her time reading and inventing memory games. तो उस क्या हुआ कि उसका जो बोट का फ्यूल इंजन वो था, फ्यूल था, गैस थी, वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी, और उसको ये पता चल गया कि वो रोज नहीं चला पाएगी अपनी बोट। बाय जनवरी 8, स्ट्रगलिंग struggling way to gain a few miles every day, she calculated that she was only about 700 miles from Barbados, the nearest of West Indies. तो वो जहाँ पे सेल कर रही थी, उसने देखा कि वो एक जगह है बारबाडोस, उससे सिर्फ 700 माइल्स पे है। The twins' stay sails were working again now, and she was creeping along her course, but the fatigue was beginning to tell. Fatigue मतलब ये बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत यूज होता है ये वर्ड। मैम थकान, थकान थकान। यस करेक्ट। तो कह रहे हैं कि जो दोनों उसके सेल्स थे, वो काम तो कर रहे थे, लेकिन उसको साथ में थकान बहुत ज्यादा थी, और वो थकान दिखने लग गई थी। शी सस्पेक्टेड दैट शी वाज सफरिंग फ्रॉम अ विटामिन डेफिशिएंसी, मतलब उसको एक विटामिन की कमी हो रही थी। ऑल्दो शी हैड फेथफुली टेकन हर विटामिन टैबलेट्स, एंड हर मेंटल डिप्रेशन वाज एज मच कंसर्न टू हर एज अ फिजिकल हेल्थ। मतलब कि वो फिजिकली उसकी बॉडी तो थकी थी ही, दिमाग से भी वो जैसे डिप्रेशन हो रहा था उस बोट पे बैठ के। Although she had originally planned to sail a little further to Antigua, she decided to head for Barbados, the nearest West Indies island. वो जाना तो एंटीगुआ चाहती थी, जो थोड़ा ज्यादा आगे है, लेकिन फिर उसने डिसाइड किया कि वो बारबाडोस जाए, जो कि ज्यादा पास में था वेस्ट इंडीज के। Sailing through squalls that required her to reef and change sails constantly, usually in the middle of the night, she fought on the northwest. Reef का मतलब जी मैम। चट्टान चट्टान हाँ, तो जैसे उसके रास्ते में कुछ कुछ रॉक्स आ रहे थे, कुछ आ रहे थे, तो उसके बारे में ही बोल रहे हैं कि एक सेकेंड कहाँ गया, हाँ। तो उसकी मतलब बहुत सारी चीजें आ रही थी, बट वो सबको एड्रेस कर रही थी। She passed the 60-day mark, the maximum time she had calculated for the voyage. Now she must ration both food and water rigidly. तो कह रहे हैं कि उसने वो 60 डेज सोच करके आई थी कि वो 60 डेज सेल करेगी मैक्सिमम टाइम, और उसने उसी हिसाब से अपना पूरा वॉयज, वॉयज का मतलब सफर, उसने ऐसे ही अपना पूरा वॉयज प्लान किया था।
तो अब क्या हुआ कि जस्ट क्योंकि वो इतने दिन का ही खाना सोच के आई थी, इतने ही लाई थी, लेकिन अब उससे ज्यादा दिन हो गए, तो कह रहे हैं अब उसको बैठ करके ध्यान से सोचना पड़ेगा कि वो डेली कितना पानी और कितना खाना खा सकती है ताकि वो खत्म ना हो जाए. To make Felicity Ann steer better, she tried streaming heavy ropes astern, but in changeable squalls, the rope got tangled up, and then she had to pull them in the cockpit and untangle them. तो वो कह रही कि अपने आप को एक जगह अटकाने के लिए उसने अपने रोप्स बिछाए, लेकिन जो रोप्स हैं वो फंस गए, वो टैंगल्ड मतलब फंस जाना. They got जो rope आपस में ही फंस गए, and she had to pull them into cockpit and untangle them. तो उसको अब cockpit क्या होता है, जो बोट का एरिया होता है आगे वाला, उसको cockpit कहते हैं. This exhausted her even more. और exhausted का मतलब fatigue का ही synonym है, थकान. थकान होनी. And her eyes were getting so swollen that seeing this was difficult. Finally, on January 8th, weak and dispirited, she made out a faint shape on the horizon, the mountainous outline of Barbados. As she came up on the island, hungry for the sight of houses and green grass, night fell, and she was forced to stand offshore until morning. तो पहुंच तो गई वो बारबाडोस, और वो पहुंची एकदम भूखी घर ढूंढने के लिए, लेकिन उसको वेट करना पड़ा रात को सुबह तक के लिए, ताकि वो किसी से मदद मांगे. सो नवीन, समझ आया ये अब? Yes, ma'am. ओके. तो ये एग्जॉस्टेड, फटीग्ड, टैंगल, अनटैंगल, Done. फेलिसिटी, Yes, ग्रीफ, ma'am. डिप्रेशन, इंटरस्पर्स्ड, कंसोल्ड, बहुत सारे वर्ड्स मिल गए हैं. सबने लिख लिए हैं कंसो वर्ड? कंसोल्ड मतलब दिलासा दिलाना. हाँ, दिलासा देना. सांत्वना देना. यस. इंटरस्पर्स्ड का मतलब कौन बताएगा? कहाँ मैम? ये इंटरस्पर्स्ड, मोर काम, Distribute. Distribute. डिस्ट्रीब्यूट. करेक्ट, करेक्ट. तो आई थिंक ये पैराग्राफ बहुत अच्छा था. बहुत सारे वर्ड्स मिल गए हम लोग को, और ऐसे ही हम लोग डिफिकल्ट उठा के थोड़ा थोड़ा अपना लेवल बढ़ाएंगे. एक और पढ़ एक और इजी पढ़ लें या क्या करना है? ये थोड़ा सा बड़ा है, हमारे पास 12 मिनट है. स्टार्ट कर लेते हैं ये वाला. Who's going? आर्यन, फिर से. नवीन, आपको पढ़ना है? आर्यन ठीक रहेगा मैम, ताकि सबसे एक छोटा एक वही है क्लास. एक एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं. आर्यन प्लीज. Within the human body flows a river unlike any other earthly river, a crimson stream that courses through every organ, twists past every cell on a journey that stretches 60,000 miles, enough to circle the planet 2.5 times. Earth rivers refresh the land with water. The body stream nourishes and clean, Lenses. cleanliness, delivering food and oxygen to where I was oxygen to every cell, removing waste regularly. The human environment, Earth river flows through The land with water. inorganic rock and sand. The body rivers travel though living tissues. The powerful heart that people Propels. Propels.
प्रोपेल का हमने मतलब पढ़ा propels. था, This प्रोपल्शन याद है? डू यू रिमेंबर द वर्ड प्रोपल्शन, oh, आर्यन? this stream and the vessel that guide it are all alive. The human propulsion liver मतलब can संचालन शक्ति, propulsion. regulate its own velocity, its bank, widening or narrowing to control the shifting tides, and it can change its own instantly channeling. It shifts current to meet new demands, swimming or sleeping, eh, con- Contemplating, contemplating, celebration, celebrating, running a race or rock and infant each alters the flow of this powerful river. The life giving loop every 60 seconds, 1440 times a day, our blood cycles through the body, traveling the double loop from heart through lungs and from heart through body, known as cardiovascular, cardiovascular system. Fresh oxygenated blood begins to oxygenate the body tissues by bursting from the left side of the heart into the arching aorta, the body's largest artery. Even the average resting heartbeat is about 2 ounces of blood against the aorta wall. With great force, these tidal waves of blood smash against it 70 times a minute, delivering blow to 5 billion times during the average lifespan. A ridged metal piece could not withstand this battering for long, but the living tissues of our blood vessels has evolved with this function. Artery walls, 3 layers, a soothed inner lining, a thick middle layer of elastic membranes and muscle, and an outer layer of fibrous connect, connective tissues. The elastic membrane stretches with the impact of each of blood. Its strong muscles fibers then recall, changing the intermittent waves into one continuous stream. The resil muscle also act as subsidiary pump, propelling blood through a large sign at a rate of 1 foot a second. Ah, in order to divide and subdivide, the elastic membranes in their wall diminish, and the proper of proportion, muscle growth grows. A single muscle cell may react two or more or 3 times around each of the small cells. The last short branches of article uh, artery squeezing and relaxing these muscle rings force blood into the 10 billion capillaries that fan throughout the body. Most tissues, brain, intestine, heart, blood vessels are laced with so dense a network of capillary that no cell lies more than a
millionth of an inch from a blood supply. Okay. Blood with gossamer walls, only one cell thick, are so fine that even red cells must be bent and twisted to squeeze one net ओके, at a वेरी गुड, गुड जॉब। ओके, तो अब 5 मिनट है हमारे पास, कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। ट्विस्ट का मतलब मेरा time. हम बदलाव आना, हाँ, बदलाव आना। नहीं, ट्विस्ट मतलब जब हम किसी चीज को मोड़ देते हैं। वो गाना सुना है ट्विस्ट? एक गाना भी तो है ट्विस्ट, है पता नहीं कौन सी मूवी का है, सैफ अली खान। बट ट्विस्ट मतलब होता है कि जब किसी चीज को बेंड कर देना या मोड़ देना। ओके, वेलोसिटी, कौन सा? वेलोसिटी। हाँ, वेलोसिटी पे अब अभी आते हैं, और कुछ नहीं है यहाँ पे। वेलोसिटी का मतलब ना गाड़ी की इतनी वेलोसिटी है, उसकी स्पीड। हाँ, एग्जैक्टली। विकी वेलोसिटी हम यूज करते हैं किसी चीज की स्पीड को मेजर करने में। जैसे हाई विंड है, उसकी स्पीड वेलोसिटी में मेजर करते हैं। इट्स बैंक्स वाइड। नैरोइंग का मतलब मैम नैरो मतलब होता है सकरा। पतला। वाइडनिंग मतलब मैम बड़ा चौड़ा। चौड़ा। बड़ा होता है बिग, वाइड होता है चौड़ा। मीठी। स्विफ्ट मतलब मतलब तेज। तेज, हाँ। स्विफ्ट मतलब ओके, फिर तेज। कौन सा? स्विफ्ट मतलब तेज में होता है ना, हाँ, करेक्ट करेक्ट रफ्तार। करेक्ट। स्विफ्ट मतलब हाँ, तेज। कॉन्टेम्पलेटिंग का मतलब होता है ना कुछ ऐसे, हम लोग सजेशन लेते हैं किसी से, क्या क्या, दोबारा बोलना। किसी बात पे डिस्कस करना। हाँ, मतलब जब हम कह सकते हैं, जब हम रिफ्लेक्ट करते हैं ना, जैसे जब हम कोई चीज डीपली सोचते हैं। कॉन्टेम्पलेट मतलब कि हम किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं बहुत डीप थॉट्स में, तो वो होता है कॉन्टेम्पलेटिंग। वॉयज बताया था मैंने, कौन बताएगा? सफर। सफर। वॉयज, जर्नी। हिंदी वाला सफर, इंग्लिश वाला सफर नहीं। आ, अच्छा, इवॉल्व मतलब हमने ये वर्ड डिस्कस करा मैम है, इवॉल्व। विकास होना। हाँ, ये गुड जॉब। हम सबको इवॉल्व होना है, हम सब इवॉल्व होते रहते हैं टाइम के साथ। इंटरमिटेंट मतलब इंटरमिटेंट मतलब कभी कभी, मतलब इंटरमिटेंट रखते हैं ना कभी कभी, मतलब महीने हाँ, में जब 2 दिन। हाँ भाई, इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट मतलब बेसिकली होता है कि जब कोई चीज इरेगुलर हो, मतलब हाँ, कोई हाँ चीज जैसे ना मतलब रेगुलर में ना हो। ऑपोजिट ऑफ रेगुलर। जैसे कि कभी कभी मेरे घर में वाईफाई का प्रॉब्लम आता है, तो मैं बोलती हूँ कि हाय, टुडे आई एम हैविंग इंटरमिटेंट वाईफाई इश्यूज, सो आई विल नॉट बी एबल टू वर्क। इसका मतलब कि मेरा इंटरनेट जो है वो इरेगुलर है, तो इंटरमिटेंट मैंने ऐसे आता है। मैंने रेगुलर वे में नहीं होना इंटरमिटेंट। हाँ, मैम इंटरमिटेंट। आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत चल रही है। मैम हाँ, जैसे कि मैं हम लोग भी बहुत से जैसे लोग तो हायर करते करते हैं, हैं। तो इंटरमिटेंट हायर करते हैं कि आप महीना में 10 दिन आएंगे, 20 दिन नहीं हाँ, आएंगे। हाँ, इंटरमिटेंट। इरेगुलर, वही वही।
तो वही हाँ, आई थिंक इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी यही होता है, 14 घंटे 16 घंटे खाना मत 16 हाँ घंटे ये खाना नहीं होता और बाकी 8 घंटे खाना होता है मैम। हाँ, मैंने भी किया है ट्राई, अच्छी चीज है। हाँ, अच्छा होता है मैम। डिमिनिश का मतलब? Very मैम less. गायब हो जाना। गायब होने हाँ, यस। स्क्वीजिंग मतलब? मैम निचोड़ दबाना। लेना। निचोड़ना। एक्सक्यूज मी दबाना गोल। गोजमर, मुझे भी नहीं पता है गोजमर का मतलब क्या होता है, सर्च करती हूँ। अच्छा, गोजमर कुछ होता है, ये जो स्पाइडर्स जो वेब बनाते हैं, वो जो एक फिल्म टाइप की बनती है, उसको गोजमर बोल रहे हैं। नेट होता है। हाँ। डेंस मतलब? भारी। नहीं। डेंस जंगल, क्या मतलब होगा इसका? What? डेंस जंगल। लोग कहते हैं, मुझे बोलते हैं कि तुम्हारे बाल बहुत डेंस हैं, इसका क्या मतलब होता है? डेंस मतलब होता है घने। मैम घना, घना। घना, घना। हाँ एग्जैक्टली, तो डेंस फॉरेस्ट बोलते हैं, डेंस हाँ, हेयर हाँ, बोलते हैं, वो होता हाँ, है हाँ। घना। हाँ, आई थिंक दैट्स इट। नेटवर्क तो पता ही होगा सबको क्या होता है। नेटवर्क, कहाँ मैम ये डेंस अ नेटवर्क। मेरे को तो दिखाई नहीं दे सबसे लास्ट वाले पैराग्राफ की सेकंड लाइन। रहा। Yes, ma'am. दिख गया network. डेंस अ नेटवर्क। यार क्या है, मुझे हो जाना। सॉस ले लो। ठीक है, पता है सबको फिर? ओके, तो मैं ये वाला, हमने इसमें से, इस वाले से हमने 3 पैसेज भेजे हैं, करे हैं। मैंने पंकज जी को अपना नंबर भेज दिया है, एंड मैं ये थोड़े बहुत ये भेज देती हूँ, जो हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं, तो आप लोग फिर से ये चीजें पढ़ लेना, एंड प्रैक्टिस कर लो जो भी वर्ड्स हम इसमें हैं। एक्चुअली मैं जो ये भेजूंगी ना, इन तो ये मैं ऐसे डाउनलोड करती हूँ कि जैसे एक पैसेज है और फिर पैसेज के अंदर ही कुछ क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप लोगों के पास टाइम हो और आप लोगों को ज्यादा मेहनत कर सकते हो, तो मैं तो ऐसा बोलूंगी कि जैसे एक छोटा सा पैसेज दिव्या आपने आज पढ़ा था, इस पैसेज को दोबारा पढ़ो, इस पैसेज में मतलब देखो। सबके पास इंटरनेट है, सिर्फ गूगल पे जाके सर्च करना होता है कि क्या है, और कोशिश करो कि जैसे ये आंसर्स हैं, थोड़े थोड़े आंसर करना स्टार्ट करो, तो उससे अपने आप सेंटेंस बनाने की आदत पड़ जाएगी। तो ये इसमें क्या है कि इसमें हर पैसेज के बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ट्राई करो उसको अटेम्प्ट करने की, एंड आई थिंक लास्ट में सारे आंसर्स हैं। शायद आंसर्स नहीं है, बट आंसर्स हम डिस्कस कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं ये शेयर कर दूंगी एक बार, पंकज जी ग्रुप बना देंगे तो। ठीक है, ओके फिर ठीक है। मैं अगर कल ज्वाइन करूंगी, तो कल मुझे थोड़ा बाहर जाना है, तो अगर मैं करूंगी ज्वाइन, तो मैं 5-5:30 के अराउंड करूंगी, 1 घंटे के लिए। बट श्योर नहीं हूँ मैं, तो व्हाट्सएप पे मैं कंफर्म बता दूंगी। लेकिन इन केस में नहीं आती हूँ, तो ये मैं शीट शेयर करूंगी, तो फिर आप लोग ऐसे ही रीड कर सकते हो, कोई एक स्क्रीन शेयर कर दे एंड देन रीड कर लो। ठीक है, ओके, हैव अ गुड